Okay, so we are starting with the new chapter, chapter number 5. And the name of the chapter is Accounting Equation. And Business Transactions. Now, let's understand exactly what we are going to study in this chapter. What is this accounting equation and all? Now, we started our subject accountancy with transactions. Now, while recording the transaction, we have really understood that transactions, every transaction will have two effects. One is debit, other is credit. Now both the effects of the transaction are equal and both are opposite sign. यानी एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, but the amount is the same. In short, debit is always equal to credit. So based on this concept of two effects of every transaction, when we say debit is equal to credit, we came up with the concept of assets is equal to liabilities. Assets in any business is equal to liabilities. But what happened is liabilities are divided into two parts. Now, why two parts? You remember we did this concept of capital, owner bringing money in the business is known as capital. So capital of the business is also a liability of the business towards the owner. ये पैसा ओनर का है तो बिजनेस के लिए इट्स अ लायबिलिटी, बट बिकॉज ये लायबिलिटी इज टुवर्ड्स द ओनर, इसको हम कहते हैं कैपिटल. बट एट द सेम टाइम बिजनेस को फंड्स की जरूरत है तो बिजनेस बाहर से भी बोरो करता है, उधार पे गुड्स खरीदता है. तो बिजनेस का लायबिलिटी दो टाइप का है, एक है टुवर्ड्स द ओनर और दूसरा है टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स. नाउ ये जो लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर है इसको हम कहते हैं कैपिटल, और जो लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स है उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज के दो पार्ट है, वन इज टुवर्ड्स द ओनर जिसको हम कहते हैं कैपिटल एंड अदर इज टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स जिसको हम कहते हैं लायबिलिटीज. तो इक्वेशन क्या बना? असेट is equal to capital plus liability, or we say A is equal to C plus L. Short form में it is also known as A is equal to C plus L. यानी assets are always equal to capital plus liability. I'll write it once again. Assets are equal to capital plus liabilities. Now you will say कि sir ये equation तो सही है पर क्या काम है ये equation का? See, after giving effects of any transaction, okay, obviously there will be two effects. One is debit, other is credit. Amount is equal and with opposite sign. Now, for every business transaction, this left hand side should be equal to right hand side. If this is not equal, it means तुम्हारा accounting सही है नहीं. पता चला? पता चला? ये जो equation है इसको हम कहते हैं accounting equation. ये वाले equation को this is known as accounting equation. Or it is also popularly known as balance sheet equation.
नाउ ये बैलेंस शीट क्या है? ये बैलेंस शीट इज बेसिकली दैट स्टेटमेंट which shows us the true financial position of the business. तो बैलेंस शीट इक्वेशन, सी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आई विल शो यू just for your knowledge. Okay, later on you have to make a balance sheet also. Balance sheet is again a format like this. There are two sides of it. Okay, amount है, ये अमाउंट का कॉलम है रुपीस, rupees. उसका right hand side, I'll call it right hand side because balance sheet is not a account, it's a statement. तो यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं है, यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वी राइट असेट्स और यहाँ पे वी राइट लायबिलिटीज. पर ये जो लायबिलिटीज है उसका टू पार्ट है. उसका एक पार्ट है कैपिटल और दूसरा पार्ट है लायबिलिटीज. और असेट्स, तो सारे असेट्स आ गए. असेट को हम बाइफरकेट कर सकते हैं इनटू फिक्स असेट, करंट असेट. तो ये साइड पूरा हमारा है असेट्स. तो this balance sheet, your left hand side should be equal to right hand side, or capital plus liability is equal to asset, or asset is equal to capital plus liability. Now ये equation उसको अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं. कैसे? We can say A is equal to C plus L. We can also say C is equal to A minus L. We can also say L is equal to A minus C. तो अलग अलग LHS RHS से we can change the sides and we can get various equations. इसको और भी हम कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं पर अभी हम नहीं करना चाहते. जस्ट फॉर योर नॉलेज कि वी कैन से असेट इज फिक्स असेट प्लस करंट असेट, लायबिलिटी इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी. बट अभी हम वो सब डिटेल में नहीं जाते. हम एक बेसिक इक्वेशन ही सीखते हैं जहां पे A is equal to C plus L. It means for every transaction this equation should hold true. Hold true यानी क्या कि your LHS should always be equal to RHS. इसका मतलब ये भी है A is equal to C plus L है तो असेट इंक्रीज है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी इंक्रीज. असेट डिक्रीज है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी डिक्रीज. असेट में कोई चेंज नहीं है तो कैपिटल लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है. पर यहाँ पे अगर LHS is not equal to RHS है, it means you have made some mistake और तुमने प्रॉपर इफेक्ट दिया नहीं है. तुम अक्सर ऐसा सुनोगे तुम्हारे सीनियर से कि हमारा एग्जाम में सम टैली हुआ नहीं. टैली नहीं हुआ, बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ वायोलेशन ऑफ दिस बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन जहां पे कहीं पे कोई इफेक्ट देने में गलती हो गया है जिसकी वजह से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो गया और बैलेंस शीट टैली हुआ नहीं. अंडरस्टूड दिस? बैलेंस शीट क्या है पता चला? ये उसका एक बेसिक फॉर्मेट है. तुम डिटेल में बैलेंस शीट करने वाले ही हो, ये इक्वेशन समझाने के लिए. तो ये तुम देख सकते हो कि दिस शुड ऑलवेज टैली. ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल होना चाहिए. अगर ये इक्वल नहीं है इट मींस कहीं पे तुमने ये इक्वेशन का इफेक्ट बराबर दिया नहीं है. यानी कहीं तुम्हारा LHS may not be equal to RHS. समझ में आया सबको ये? All of you understood this? Okay. Yes, sir. I'll give you some extra transaction right now. तुम्हें ये लिखना है तो I give you a moment. Yes, sir. You may please write this.
Okay. Now please ध्यान देना. I'll give you some transactions so that you understand the concept properly. Now, write down a transaction extra. First, started business by bringing cash. Rupees 10,000. Now, very common transaction. We have done this so many times. Started business by bringing cash, rupees 10,000. Now, do you know the two effects of this? Yes. What comes in? Cash. Cash comes in. So you write the entry now, cash account debit, 10,000. Who is the giver? Owner is the giver. So capital account credit 10,000. Now ये जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है, लेट्स सी कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे अफेक्ट करता है. नाउ A इज इक्वल टू C प्लस L. नाउ कैश क्या है तुम्हारा? कैश इज योर असेट. कैश इज योर असेट. Yes or no? Yes. Yes, sir. Cash comes in the business. तो can I say cash business में आया तो business में asset increase हो गया. हेलो. Yes. और कैपिटल आया, ओनर कैपिटल लेके आया तो बिजनेस का लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर यानी कैपिटल भी इंक्रीज हो गया. यू अग्री? Yes. यहाँ पे कैश में ए में प्लस लिखूंगा मैं 10,000. कैपिटल भी प्लस हो गया 10,000. लायबिलिटीज में कुछ नहीं है, जीरो. Therefore 10,000 is equal to 10,000. So LHS is equal to RHS. तुमने देखा ये प्रूव हो गया. लिख दो प्लीज. एनी डाउट? Are you able to understand this LHS RHS? तुमने देखा मैच हो गया. Second, purchased goods of rupees 12,000. Now we all know the entry for this. Purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account. Now purchase account क्या आया? What comes in? What comes in? Goods. Goods comes Good. in. तो asset increase हो गया. But cash goes out. तो क्या हुआ? क्या decrease हुआ? कैश कैश डिक्रीज हुआ तो कैश भी हमारा असेट है. तो कैन आई से एक असेट इंक्रीज हो गया, दूसरा असेट डिक्रीज हो गया. यू अग्री? Yes. यहाँ पे A इज इक्वल टू C प्लस L में एक असेट इंक्रीज तो प्लस 12,000, दूसरा असेट डिक्रीज तो असेट साइड पे ही माइनस 12,000 विच इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं, लायबिलिटी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं. तो कैन आई से 0 इज इक्वल टू 0. सो LHS इज इक्वल टू RHS. 0 is equal to 0 यानी क्या? In short, this equation should hold true. LHS should be equal to RHS. पता चला सबको? Yes, sir.
नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. नाउ तुम्हें ये तो पता चल गया कि असेट क्या है, ओके, लायबिलिटी क्या है तुम्हें पता ही है. बट मान लो कि एक ट्रांजैक्शन में तुम्हें ऐसा देता हूं, ध्यान देना प्लीज. लिखो थर्ड एक्स्ट्रा, पेड सैलरी ₹5,000. Now you all know the entry. Salary account debit 5,000 to cash account 5,000. Now यहाँ पे A is equal to C plus L कैसे करेंगे? यहाँ पे A is equal to C plus L कैसे करेंगे? कैश गोज आउट तो एक असेट डिक्रीज, पर सैलरी का क्या करेंगे? क्या सैलरी तुम्हारा असेट है? सैलरी क्या है तुम्हारा? Liability. लायबिलिटी है. सैलरी लायबिलिटी है. સેલરી લાયબિલિટી કેવી રીતે છે? માનો આપણે તો રૂપિયા આપી દીધા છે, આઉટસ્ટેન્ડિંગ થોડી. આપી દીધા. હા, ઇલેક્ટ્રિસિટી નું બિલ આવે ઘરમાં તો ઇલેક્ટ્રિસિટી નો ખર્ચો છે ને, ઇટ્સ અ એક્સપેન્સ. तो सैलरी इज अवर एक्सपेंस. तो किसको अफेक्ट करेगा? ए को, सी को या एल को? हेलो हेलो, ए को, सी को या एल को? सी को. चलो सर कैपिटल. ओके, चलो ध्यान दो. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट. ओके, यस, कैपिटल सही है, पर क्यों? सर जो एम्प्लॉयज को जो वेजेस मिलता है वो कैपिटल में से, मतलब बिजनेस के जो उसमें से ही जाता है ना. नो, पता नहीं सर. ओके, चलो ध्यान दो. मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझाता हूं इसके लिए. सी, ओनर जो है ना, ओनर वो बिजनेस में पैसा लाता है. ओनर ब्रिंग्स मनी इन द बिजनेस. ओके, प्लीज ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना. ओनर मान लो बिजनेस में 10 लाख रुपीस लेके आया. नाउ ओनर का क्या पर्पस है? व्हाई शुड ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस? व्हाट्स द मोटिव ऑफ द ओनर? टू अर्न प्रॉफिट. टू अर्न प्रॉफिट. वेरी गुड. अब मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, तो ये प्रॉफिट किसका है? ओनर का है या बिजनेस का है? बिजनेस. सोच के बताओ. सर प्रॉफिट तो ओनर ले जाएगा ना. बैंक में तुमने पैसा रखा है. प्रॉफिट तो ओनर नहीं ले जाएगा. एक ही मिनट, एक ही मिनट. तो बच्चों मुझे बताओ कि ये 3 लाख रुपीस जो है वो किसका है? ओनर का है या बिजनेस का है? ओनर. का. ओनर का. यानी अगर बैंक में तुमने पैसा रखा है तो तुम्हारा पैसा तीथी सुनना बराबर બેંકમાં તે તારા રૂપિયા રાખ્યા છે અને એના ઉપર જે ઇન્ટરેસ્ટ આવે એ બેંકનું કે તારું? મારું. કેમ? પૈસા મેં મૂક્યા હતા ને એટલે. હવે તો તું એકદમ સ્માર્ટલી આન્સર કરે છે. તો પછી આમાં કેમ બિઝનેસ ના થઈ ગયા? જેના પૈસા હોય લાયબિલિટી છે ને. શું? હજુ તો મને બિઝનેસ ની લાયબિલિટી થાય ને હજુ. એટલે પૈસા કોના છે? કોનો હક છે આ 3 લાખ રૂપિયા ઉપર? Who deserves to get this 3 lakh? This 3 lakh belongs to whom? Owner or business? ઓનર.
owner. All of you agree? Yes, sir. All of you agree? Yes. Yes, sir. ऐसा लगाया मेरे बिजनेस में तो प्रॉफिट भी मेरा ही होगा ना भाई, पैसा मेरा है तो. Yes, sir. You agree? Now, ध्यान दो. अब ये जो 10 लाख था, कैन आई से अब ओनर 13 लाख बिजनेस में से ले सकता है, उसका राइट है 13 लाख रुपए के ऊपर. हेलो, Yes. Yes, sir. 10 लाख फिर Yes, प्रॉफिट, तो नाउ 13 lakh he can take from the business. So can I say with profit, ध्यान दो, capital increases. You agree? Yes. अब ओनर का कितना पैसा है बिजनेस में? इनिशियली 10 था, अब 3 लाख का प्रॉफिट. अब ओनर का कितना पैसा है बिजनेस में? 13 lakh. 13 lakhs. तो प्रॉफिट है तो कैपिटल इंक्रीज. पर मान लो कि लॉस होता तो क्या? अगर लॉस होता तो क्या? Capital तो 7 लाख होता कैपिटल. कैपिटल क्या हो जाता? डिक्रीज. Decrease. Increase हो जाता. All of you agree with me? Yes. Yes. I say with every income in the business, profit increases, so capital increases. With Yes. every income Yes, in sir. the business, profit increase, so capital increase. You agree? Yes, sir. Yes, sir. Or with every expense, we can say either loss increase or can I say because of expense my profit decrease? Yes. Yes. Expense, my Yes. profit decreases. So can I say as profit decreases, my capital also decreases? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. With this, तो सैलरी का खर्चा हुआ तो my capital will decrease. Understood this? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से एक बार ध्यान दो, अगर मैंने 10 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, फायदा होगा तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा, और नुकसान होगा, खर्चा होगा तो माय कैपिटल विल गो डाउन. यू अग्री नाउ? यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? Yes, sir. Yes. तो याद क्या रखना है? विथ एवरी एक्सपेंस कैपिटल डिक्रीज, विथ एवरी इनकम कैपिटल इंक्रीज. गॉट इट ऑल ऑफ यू? अगर एक्सपेंस है तो लिख लेना Yes. कैपिटल डिक्रीजेस. नाउ कैपिटल क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ तो कैपिटल भी कम हो गया. अब हम कम पैसा बिजनेस से ले जा सकते हैं. और अगर इनकम हुआ तो कैपिटल Increases. increases. Understood this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now लिख लिया सबने? तो ये कंसेप्ट A is equal to C plus L पता चला. What are assets? Anything which we own, we have a right to use, we have a right to recover. What are liabilities? Amount which we owe. अगर किसी को पैसा देना बाकी है तो वो हमारा liability है. Towards the owner है तो capital, towards outsider है तो liability. Is this clear? और एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल डिक्रीज, इनकम हुआ तो कैपिटल इंक्रीज. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर गोइंग टू डू अ सम. कम टू illustration number 2. Illustration number 2, page number 115. You can see the format on page 116 and 117. तुम्हें अकॉर्डिंगली सिमिलर फॉर्मेट नोटबुक में बनाना है. सो प्लीज मेक द फॉर्मेट. प्लीज मेक द 2 पेज का फॉर्मेट. ओके.
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिला के. Okay, you will have the heading, serial number, journal entry, debit, credit, effects, and A is equal to C plus L. Please make the format SF. The page 116 वाला format. Ah, yes, 116, 1171. ये लेक्चर फिर से एक बार देखना और ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड भी है वो भी एक बार देखना so that these concepts become clear. Okay, it's a very important concept. હેલો સર સર આમાં તો બે પેજ લિંક કરવા પડશે ને? yes. બે પેજ કરીને કરવું પડશે એક પેજમાં નહીં આવે. ઓકે, આમાં જેવી રીતે સોલ્યુશન છે એવી રીતે જ you have to make a format. સર Yes. એક જ સેકન્ડ. અવાજ આવ્યો. सर Yeah? इसमें एलएफ नहीं बनाने का? नहीं बनाने का. Not ओके सर. not required. સર ડન. Okay, very nice. We'll just start the sum. Okay, now see the question. Write journal entries for the following transaction and explain accounting treatments based on equation. So I write the first transaction. Ramesh has bought cash of 20,000 and furniture of 10,000 to commence business. Now let's write the journal entry first. So what comes in? Cash comes in. So cash account, debit, amount is 20,000. Furniture comes in. So furniture account, debit. Are you able to watch this on your mobile screen? Is the amount and everything visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, two. Who brings this? Owner. So to capital account. 30,000. Now यहाँ पे narration और ऐसा कुछ नहीं लिखना है. This is just for the conceptual understanding of this balance sheet equation. Okay. Now effects. Now let's give the effect. What happens? Cash comes in. So cash increases. Furniture increases. And what happens? Capital also increases. Now, effect लिखना जरूरी है because it's a format of the textbook. Now, cash increase. तो cash हमारा asset है. तो we write cash. तो asset increase. तो cash में we write the amount is 20,000. Furniture 10,000. So total $30,000. Do the total. Is equal to now capital. So capital may you write capital directly 30,000. Now liabilities में कुछ भी नहीं है. So we write 0. Now you can see LHS is equal to RHS.
So if this is over, close this, draw line. સર લાયબિલિટી માં પેલું +0 એ બધું લખવાનું. हाँ लखी देना plus, okay, +0. Okay, it is not coming as dash. All of you understood the first transaction? Should I go to the second one? યસ. Second one, rupees 5,000 deposited in bank and opened account. So let's write the entry first. Bank account debit to cash account 5,000. Bank balance increases and cash balance increases. You can write like this as well. સર પેલો એરો બતાવાય? ના, સ્કૂલમાં ટીચર બતાવે તો ચાલે, સ્કૂલમાં ટીચર ના બતાવે તો નહીં બતાવવાનું. We follow the format only. So bank balance increase, now यहाँ पे ध्यान देना, and cash balance increase. अब business में देखो, see balance sheet shows the financial position of the business. तो let's see कि क्या position है अभी. तो cash हमारे पास, ये अंदर के कॉलम में मैं लिख रहा हूँ 20,000. 20,000 था कैश, जो यहाँ से आया 20,000. एक मिनट, ये कैश बैलेंस इज नॉट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस. बैंक बैलेंस इंक्रीज एंड कैश बैलेंस डिक्रीज. अब माइनस करेंगे, माइनस हमने डिपॉजिट किया इन बैंक, कितना डिपॉजिट कर दिया 5,000. सो -5,000, अंडरलाइन दिस, आउटर कॉलम. अब तुम्हारे पास है 15,000 कैश. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. 20,000 का कैश ओनर लेके आया, उसमें से 5,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया. तो अब कैश का पोजीशन क्या रह गया हमारे पास? 15,000. एट द सेम टाइम बैंक में बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक में कितना आ गया? 5,000. सो यू कैन सी ओवर योर बैंक बैलेंस इंक्रीज, तो बैंक आ गया 5,000 का असेट में. कैश बैलेंस डिक्रीज, एक असेट डिक्रीज हो गया, दूसरा असेट इंक्रीज हो गया. टू द टोटल 20,000. Oh, I'm sorry, इसमें कैश और बैंक तो आ गया, बट वी ऑल्सो हैव फर्नीचर. फर्नीचर कितना है? 10,000. तो अब टोटल करो, टोटल कम्स टू 30,000. तो असेट का पोजीशन अब क्या हो गया? कैश बिकेम 15, बैंक बिकेम 5 एंड फर्नीचर 10,000. सो 30,000. कैपिटल remains as it is, no change, 40,000. No, नहीं खबर. So can you please explain it again? So sorry, So can you please explain it again, the asset column? cash was 20,000 in the beginning, okay? In the first transaction, we got cash of 20,000. Out of this 20,000, minus what? Deposited in the bank. How much you deposited in the bank? 5,000. So how much cash is left with us in our business? 15,000. 15. Okay, bank, now bank balance increase, so bank is now 5,000, and furniture जो 10,000 का था as it is. So now total assets are 30,000. Understood this now? Yes. This what we write is known as the inner column, and this is known as the outer column. Now capital, nothing is to be done. Same 30,000 का 30,000 है. There is no change in it.
So 30,000 as it is, and liability is nothing, zero ka zero. Draw line, close this. Third one. Goods of 8,000 purchased from Rajesh. So what is the entry for this? For Purchase account debit. who is the giver? Rajesh is the giver. So Rajesh account 8,000. Now purchase account goods comes in. So goods increases. Rajesh is a liability. So you can write liability increases. अब ध्यान दो प्लीज, अब ध्यान दो प्लीज. नाउ ओवर हियर लेट्स सी कि पहले का क्या है हमारे पास. पहले का कैश है हमारे पास. कितना कैश है अब हमारे पास? 15,000. कैश में कोई परिवर्तन नहीं है, चेंज नहीं है. बैंक में 5,000, उसमें भी कोई चेंज नहीं है. फर्नीचर इज 10,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है. पर हमारे पास गुड्स आए तो असेट इंक्रीज, पर गुड्स आ गया तो अलग से विल शो गुड्स. कितने का गुड्स आया? 8,000 का. नाउ डू द टोटल ऑफ दिस. अब हमारे टोटल असेट्स हो गए 38,000. ओके. अब हम देखते हैं कैपिटल के साथ क्या हो रहा है. कैपिटल में कोई चेंज नहीं है. सो कैपिटल एज इट इज 30,000. टोटल 30,000, नो चेंज. नेक्स्ट. नाउ यहाँ पे गुड्स इंक्रीज तो असेट इंक्रीज, लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज. तो यहाँ पे हमारा लायबिलिटी है राजेश, तो यू कैन राइट द नेम राजेश, और यू कैन राइट लायबिलिटी इन द ब्रैकेट राजेश 8,000. तो अब यहाँ पे टोटल आ गया 8,000. नाउ चेक, is LHS equal to RHS? So right hand side is 38 and left hand side is also 38. Understood this? अब पता चला सबको? Should I proceed now? Yes, sir. Yes, sir. Now next one. Transaction number 4. Goods of 6,000 purchased for cash. Now let's write the entry purchase account debit to cash account.
6,000 6,000. नाउ अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो गुड्स इन द ब्रैकेट ए यानी असेट इंक्रीजेस एंड कैश. सो कैश इज अगेन योर असेट डिक्रीजेस. तुम ऐसा भी लिख सकते हो. आई थिंक दिस इज बेटर. तुम ऐसा ही लिखो सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू. नाउ यहाँ पे चेक कर लेते हमारा ऑर्डर क्या है. पहला कैश है तो कैश इनर कॉलम लिखना पड़ेगा बिकॉज कैश कम हो रहा है. 15,000 माइनस पेड फॉर गुड्स परचेज 6,000. सो अब हमारे पास कैश हो गया 9,000. बैंक में कोई चेंज नहीं है 5,000. फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है 10,000. गुड्स, अब गुड्स में चेंज है. कैसे पता चला? यहाँ पे गुड्स इंक्रीजेस है तो गुड्स पुराने थे 8,000 इनर कॉलम प्लस परचेज किया 6,000 का आउटर कॉलम 14,000. टोटल करेंगे 38,000. कैपिटल में कोई चेंज नहीं. लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं. आई राइट एज दे आर. फिफ्थ. Sir, wait. वेट ओके सर वेट. गेम क्या फिफ्थ? एक ही मिनट. आई वेट. फिफ्थ थोड़ा ट्रिकी है. ओके सो आई वेट. प्रोसीड नाउ. સર એમ લાયબિલિટી બાજુ કરો. ઓકે. લાયબિલિટી માં કોઈ ચેન્જ નથી. ઓકે. જેમાં ચેન્જ ના હોય એમાં ઉપર જે લખ્યું છે એ નીચે લખી દેવાનું. there is no change. Done. Done. Okay. Now fifth is an important one. Okay. Please उसको important mark करना because अगर एग्जाम में ये चैप्टर में से ऐसे सम आ रहे फ्रॉम टेक्स्ट बुक तो ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन में थोड़ा ध्यान रखना. Goods of 5,000 sold for 9,000 to Raman on credit. So who is the receiver? Raman is the receiver. Raman account debit 9,000. एंट्री तुम 9,000 से ही लिखोगे टू सेल्स अकाउंट 9,000. नाउ रमन जो है ओके वो हमारा डेटर है, वो हमारा असेट है तो इंक्रीजेस है. और सेल्स है तो गुड्स वो भी हमारा असेट है तो वो डिक्रीजेस है. पर यहाँ पे है ना प्रॉफिट भी है तो उसको हम बाद में ट्रीट करते हैं. ओके यहां तक कर लो. सर फॉरी एक बार एक्सप्लेन करो ना. जो goods of 5,000 sold for 9,000 to Raman on credit. So Raman is the receiver, debit the receiver 9,000 and to sales 9,000. તો રમન છે એની આગળથી આપણે રૂપિયા લેવાના છે તો ડેટર એટલે આપણો અસેટ ઇન્ક્રીઝિસ. વી હેવ અ નાઉ a right to receive the money from Raman. And sales, so goods goes out, so asset decreases. Understood now?
Understood now? Yes. Okay. Now let's proceed. अब ध्यान देना, थोड़ा ट्रिकी है ये. We go one by one. Now asset side we had cash, पर यहाँ पे कैश को कोई कुछ नहीं कर रहा है. 9,000 remains as it is. 9,000 का 9,000. So cash outer column 9,000. Then बैंक में भी कोई चेंज नहीं है. 5,000 का 5,000. Then फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है. 10,000 का 10,000. गुड्स, नाउ गुड्स में चेंज है. गुड्स हमारे थे गुड्स टोटल 14,000. ये 14,000 कैसे आया पता चला सबको? गुड्स 14,000 पता चला प्रीवियस ट्रांजेक्शन. Yes, sir. ओके, 14,000 के गुड्स थे, उसमें माइनस सोल्ड. कितने के गुड्स हमने सोल्ड किए? तो 5,000 रुपए के गुड्स सोल्ड हो गए. 5,000 के गुड्स गॉट सोल्ड. यू अग्री विथ मी? Yes, sir. Yes. अब हमारे पास गुड्स रह गए ऑफ ₹9,000. नाउ इसके साथ नया असेट आ गया. यू कैन सी ओवर हियर. गुड्स हो गया डेटर्स. You can write the name Raman. कितना पैसा उससे लेना है? How much amount we have to take from him? 9,000. So now do the total. 42,000. Done so far? Should I proceed now? Should I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, अब ध्यान देना, थोड़ा ट्रिकी है. Now यहां पे कैपिटल पे आ जाओ. Capital inner column 30,000. Why inner column? Now you can see कि 5,000 का goods you sold for 9,000. तो कितना profit हुआ? 4,000. 4,000. 4,000. Profit हुआ तो किस पे impact आएगा ये? Capital पे. Capital पे. तो कैपिटल में प्लस कर देंगे प्रॉफिट. You can write in bracket if you want to. 9,000 minus 5,000. तो प्रॉफिट हुआ तुम्हारा 4,000. तो अब कैपिटल कितना हो गया? 34,000. Now owner can withdraw 34,000 from the business. Understood this? Total 44,000 and liability as it is, no change. Liability Rajesh 8,000. You can always check this out ki whether it is matching or not. LHS is equal to RHS or not. 34,000 plus 8,000 is 42,000. Please have a check on this ताकि अगर कुछ लिखने में भूल गए तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा. Close this. सर बोलो निशिता. इसमें भी वो टोटल कैरिड फॉरवर्ड और वो करने का? नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल मत करना. नॉट रिक्वायर्ड. इसमें ना अभी तुम्हें लगता है कि ये सब है, वो पेज पे नहीं आएगा तो डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे चले जाओ और पीछे से फिर तुम ये सब वैल्यूज लिख ले. गॉट इट? Yes, sir.
सबको फॉर्मेट करना है? यू वांट मी टू वेट? Yes. Yes. Okay, I'll wait. Transaction number 6. Uh, can you try the 6th transaction on your own? I'll also do it. You also try to do it on your own. Okay? और कंफर्म करने के लिए you can see the screen क्योंकि I am doing it along with you. Capital now you take as 34,000. Okay? Profit कितना profit किया? 6,000 minus 3,000. 3,000 का profit किया. Profit add हो जाएगा, loss subtract हो जाएगा. Income add हो जाएगा, expense subtract हो जाएगा. Rohan, you have any doubts? So now 45,000 is the asset total, capital total is 37,000 and liability total is 8,000. Seven, purchase return, goods of 1,000 returned to Rajesh. So Rajesh is the receiver, debit the receiver. This is very interesting. To purchase return.
1000. नाउ राजेश क्या है हमारा, चेक करो राजेश कहाँ पे आ रहा है, कैपिटल लायबिलिटी असेट किधर है राजेश? Liability. 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 खरीदा हुआ गुड्स वापस किया तो लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, लायबिलिटी बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा? Decrease. Decreases. Decrease होगा. डिक्रीज हो जाएगा. वेरी गुड. एंड परचेज रिटर्न, सो गुड्स asset. Decreases. Now let's check out cash, no change, outer column 15,000, bank 5,000, furniture 10,000, goods inner column 6,000, minus purchase return 1,000, outer column 5,000, debtors Raman 9,000. $44,000. Capital 47,000. Now liability Rajesh, inner column 8,000. अब लायबिलिटी हमारा डिक्रीज हो गया तो माइनस करेंगे परचेज रिटर्न की वजह से 1,000, सो 7,000. टोटल 47 plus 7 44, 44. Eighth one. Yeah, Rohan, you have a doubt? Eighth one. You can try it on your own. Sales return now. Goods of 2,000 returned by Raman. So sales return, account debit 2,000 to Raman account 2,000. सेल किया हुआ रिटर्न आया तो गुड्स asset increases and Raman was also our asset, our debtor decreases. रमन से जो पैसा लेना था उसके उसके सामने उसने 2,000 का गुड्स रिटर्न किया तो वी विल टेक लेस अमाउंट फ्रॉम रमन नाउ, सो डेटर आल्सो डिक्रीज. कैश 15,000, बैंक 5,000, फर्नीचर 10,000, गुड्स इनर कॉलम 5,000 plus sales return 2,000, so 7,000. Debtors
Now debtor में है रमन, so inner column 9,000 minus debtor decreases, so minus sales return 2,000. ये भी हो गया 7,000. So now let's do the total. $44,000. Capital, no change, 37,000. Liability, Rajesh, 7,000. Again, no change. $47 plus 7, $44,000. So I think that's it for the day. Remaining transactions we'll do tomorrow. You also revise the concepts once again. Okay, go through the sum. See my video lecture. This lecture also I'll upload soon. So go through the concepts, revise it once again. Tomorrow we'll continue with the remaining transactions.